Hey everyone, welcome back to my channel. So let's understand what corollary is. Okay, so basic definition is here a corollary is a theorem connected by short proof to an existing theorem. It means it is a correlation with the existing theorem. Existing theorem nothing but that you have already studied or already was that video about angle theorem, correct? That is corresponding angle theorem, interior angle theorem and alternate angle theorem. And similarly for test, that is corresponding angle test, interior angle test and the alternate angle test. So if you have seen these videos, so it will help you in this. Okay, so इसका relation है in all these theorem and test से. Okay, so let's understand there are two types of corollary questions are there. Okay, so first type, that is, so the statement is, if a line is perpendicular to two lines in a plane, see, okay, it's perpendicular. Two lines are, that is line AB and line CD. These two lines given, okay, on a plane, and this intersecting on the perpendicular, that is E and F. Then the line are parallel to each other. What we have to prove? That the lines are parallel to each other, means AB is parallel to CD. We have to prove that. Let's understand. So your given information is line EF, you can see here EF, and line AB, and you can see here, and line EF perpendicular to line CD, correct? These two lines are perpendicular to each other. Again I'll repeat what information is given, that is line EF. This one, line EF is perpendicular on line AB, correct? And the second is line EF again. Line EF is perpendicular to line CD, correct? That's what it's forming a 90 degree, correct? There is angle is forming. Okay, so this information was already given. So what we have to prove? Then the lines are parallel to each other. Which two lines are there? ये दो line parallel है, that is line AB and line CD. So let's understand. So यहाँ पे angle form हो रहा है, that is ELB. It is nothing but what? 90 degree. Correct? Okay. Now the second one, again angle EMD. It is forming a 90 degree because it is a perpendicular, इसलिए यहाँ पे 90 degree form होगा. Is that clear? Okay. So from 1 and 2 what we can see, these two angle are equal because 90 degree form हो रहे हैं, मतलब दोनों एंगल सेम हो जाएंगे क्योंकि उनका मेजरमेंट सेम है. क्लियर? सो ये दो एंगल हमें इक्वल मिल रहे हैं. करेक्ट? सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दीज एंगल are equal to each other. Okay, till then clear? I hope you are enjoying this video. If you like this video, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. Okay, so okay, now we'll see the next one. Now line AB and that is line CD, these two are parallel to each other. So by which test we can say that is nothing but what? Corresponding angle test. Is that clear? ये जब दो एंगल इक्वल हो गए हैं, करस्पॉन्डिंग हो गए, आई मीन इक्वल हो गए बाय 90 डिग्री, सो हमारे लाइंस जो हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, आई मीन पैरेलल हो जाएंगे. करेक्ट? सो लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी. हम कैसे प्रूफ किया? हमने प्रूफ किया बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट कैसे फॉर्म हुआ? यू कैन सी ये एंगल फॉर्म किया था यहाँ पर और द सेकेंड एंगल फॉर्म किया यहाँ पर. करेक्ट? ये दो एंगल फॉर्म किए. अगर आप ऑब्जर्व करें ये करस्पॉन्डिंग हो रहे हैं एक दूसरे के. करेक्ट? सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी प्रूव दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी. सिंपल. Okay, now we'll see the second one, second corollary. So here the statement is, if two lines in a plane are parallel to a third line, चलिए देख लेते हैं. Two lines are given parallel to a third line. See the third line. Then these two lines are parallel to each other. Means क्या है? अगर ये दो लाइन parallel है तो ऑटोमेटिक थर्ड लाइन भी जो होगी इनके इक्वल हो जाएगी, इनके पैरेलल हो जाएगी. ओके, मीन्स indirectly all these line are parallel to each other. Okay, see here. So what information is given, that is
line L parallel to line M, and line M parallel to N, and line P is the transversal for line M and clear. Okay, so what we have to prove that here you can see then. I have already told, जब भी then के बाद का स्टेटमेंट दिया हो, जो भी स्टेटमेंट है वो आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है. सो आपको लिख लेना है गिवन, आई मीन सॉरी, दैट इज प्रूफ. सो देन के बाद के स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना होगा, दैट इज देन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. कौन सी लाइन है वो हमारी लाइन एन एंड लाइन एन, ये दो हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल हैं, करेक्ट. चलिए देख लेते हैं. So now here angles are forming. If I'm going to take this, because of transversal, angles will going to form, that is angle A and B. अगर हमने ले लिया, let's consider this. So angle A equals to angle B because corresponding angles theorem. Easy? Okay. Similarly for the next one, that is on line M and N, you can see here transversal is P. So again angle B and C are corresponding to each other. So what you can observe here from 1 and 2, आप देख सकते हैं एंगल ए बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इक्वल टू सी. सो इनडायरेक्टली अगर आप बी को हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाता है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. क्लियर, इजी. ओके, सो इसका मतलब होता है फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी. सिंपल. ओके, इजी. सो अगर एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल इक्वल हैं, सो देयरफॉर हमारे जो पैरेलल लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी. इज दैट क्लियर? एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी लाइंस क्या है, पैरेलल है. इज दैट क्लियर? ओके, सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट वी कैन प्रूव दैट these two lines are parallel to each other. Is that clear? Okay, hope you like this video. Please keep learning and keep practicing. Till then, bye bye, take care.